OP Jaisha is now joining me from Bengaluru. Jaisha, मैं अर्णव बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही? आप मुझे सुन पा रहे हैं जयशा जी? कैन यू हियर मी जयशा? हाँ जी मैं सुन रही हूँ। हाँ जी नमस्ते। तो ये जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को 42 किलोमीटर मैराथन में, तब क्या हुआ उस वहाँ पे जी, ज़रा उसके बारे में हमको बताएं। हम एक कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके मैं गया था, क्योंकि ओलंपिक्स सब एथलेटिक लाइफ में सबसे बड़ा कंपटीशन होता है और मैं अच्छा प्रिपरेशन करके गया था। मेरा ड्रीम था मैं इधर में अपना लाइफ बेस्ट करूँ, इसका बाद में मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूँ, मेरा करियर का स्पोर्ट्स छोड़ दूँ। उधर मैं पहुंच गया, हम लोग इतना ठंडा वेदर में प्रैक्टिस करके इधर से गया। उधर इतना गर्मी था। एक तो सबसे बड़ा गलती है 9:30 को कंपटीशन रखा मैराथन, वो भी टेम्परेचर 40-42 डिग्री में रोड के ऊपर मैं कंपटीशन कर रही थी। हर मैराथन में 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पॉइंट में हमेशा मैराथन में पानी होता था, बट इधर में ऐसा वाटर का कोई चांस नहीं था। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का इन बिटवीन ही पानी था और 3 किलोमीटर का बाद 5-6 किलोमीटर के बाद में 3 राउंड हम लोग को भागना था, उसमें 2 ही बार पानी रखा था और बाकी कितना भी पानी हो वो अपना कंट्री अपना एथलेट के लिए पानी रखा था। बट हमारा कंट्री का हाँ जी बोल नहीं मैं कह रहा हूँ जैसा जो दूसरे कंट्रीज के लोग थे, दूसरे कंट्रीज के एथलीट्स के लिए पानी रखा गया था, वो खुद अपने कंट्रीज वहाँ पे पानी रखते थे 2.5 किलोमीटर रखा था। हर कंट्री का बूथ है उधर में, हर कंट्री का नाम सब कुछ लिख के रखा है, उसमें हर कंट्री के लिए कितना भी कंट्री उधर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोग पानी, रिकवरी ड्रिंक्स, फूड सब कुछ रखा था। मीन्स हनी, बनाना, ऐसा एडिशनल फूड भी रखा था, क्योंकि सबको पता है 30 किलोमीटर का बाद में एथलेट का हालत क्या होता है। बट हमारा इसमें बस हमारा पॉइंट में नाम लिखे रखा बोर्ड में, बोर्ड का नीचे ना पानी था ना कुछ था। उसका बाद में मैं फर्स्ट 21 किलोमीटर में बहुत सही भागा था, क्योंकि मेरे टारगेट था मैं और एक बार अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ूं और अपना पर्सनल बेस्ट करूं। बट लास्ट 21 किलोमीटर में गर्मी इतना तेज हो गया था, हम सोच भी नहीं सकता ऐसा हालत में मैं कैसा फिनिश किया। और लास्ट मोमेंट में मैं फिनिशिंग लाइन में पहुंच गया। फिनिशिंग लाइन में पहुंच के फिर मैं उधर में गिर गया था। मेरा हालत ऐसा था, मैं इतना बोल सकता, मेरा लाइफ का 100% मैं अपना कंट्री के लिए दिया है, क्योंकि उसका बाद में अगर 1 मीटर भी ज़्यादा हो मैं नहीं भाग पाएगा था। मेरा हालत ऐसा खराब हो गया, मैं उधर में बेहोश होकर गिर गया। 3 घंटा तक मैं होश में नहीं था। मैं हॉस्पिटल उधर में क्लिनिक था, उसके अंदर लोग लेके गई। फिर मुझे सबसे पहले मेरे टेम्परेचर कम होने के लिए लोग आइस में डाल के रखा मुझे। उसके बाद बहुत देर बाद में 2 घंटा बाद में मेरा कोच आया, डॉक्टर निकोलाई सर, आके मुझे टच करके देखा। मेरा पल्स था और मेरा बॉडी बिल्कुल ठंडा हो गया था। और फिर कोच बोला ऑलरेडी मैं मर गया बोल के, और दूसरा मीन्स हमारा डिप्यूटी चीफ कोच को बोला था जयशा ऑलमोस्ट मर गया हुआ है बोल के, उन लोगों को बुलाया था। इसलिए उधर में कोच के बारे में भी झगड़ा लड़ाई हो गया था। कोच कोई डॉक्टर को धक्का मार दिया, सब बोल कर लड़ाई हो गया। बट उधर में मैं कोच का गलती नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका एथलेट इधर में मरने का हालत में उसको अंदर नहीं भेजा था, इसलिए उधर में धक्का कर रहा था। बट अभी मुझे पता चला पानी क्यों नहीं रखा, और सब लोगों को पानी रखा है, हर कंट्री पानी रखा है, उधर में कौन पानी नहीं रखा। रीजन डॉक्टर निकोलाई मना किया था, पानी का जरूरत नहीं है और पानी नहीं रखना, इसलिए अभी ऑफिशियल्स बोल रहे हैं हम लोग इसलिए पानी नहीं रखा, कोच मना किया। बट उधर में मैं मर गया, तो ये 42 डिग्री टेम्परेचर में अगर पानी नहीं रखना बोलेगा तो सबसे बुद्धू काम है, क्योंकि भागना मैं है, ना डॉक्टर निकोलाई भागना, ना ऑफिशियल्स भागना, ना फेडरेशन भागेगा, ना गवर्नमेंट भागेगा। भागना मैं ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। कल परफॉर्मेंस खराब होगा तो सब लोग पूछेगा, मुझे ही पूछेगा मैं ओलंपिक्स मेडल लेके आ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैं मेरे लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगी थी, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था, मैं ओलंपिक्स में जाके मेरा पर्सनल बेस्ट करूँ। बट इधर में मेरा हालत ऐसा था, मैं आज मरने से आज मैं बच गया तो
उसमें ये इतना करोड़ लोगों का प्रेयर है, मैं मरा नहीं, मैं आज जिंदा हूँ। अभी हर कंपटीशन के बाद में दूसरा दिन हम लोग शुरू हो जाते हैं नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन, बट अभी मुझे नहीं लग रहा है मैं 2 महीना में बेड से उड़ूँ, मेरा हालत अभी ये है। जैशा, आप तो हर कंट्री के जो मैराथनर्स थे सबके लिए पानी था, और पानी ही नहीं, आप कह रहे हैं रिफ्यूलिंग के लिए ग्लूकोज, बनानास, एनर्जी ड्रिंक, सब कंट्रीज के लिए था, सिर्फ इंडिया का रखा नहीं था वहां पे। हाँ, वही इंडिया बस नहीं रखा था वो लोग, इसलिए अभी उसको हर पूछा था, इसलिए वो लोग बोल रहे कोच मना किया इसलिए नहीं रखा, बट कोच मना करने का रीजन ये था हर मैराथन में। किसने बोला कोच ने मना किया? आपको किसने बोला ये? वल्सन सर, अभी दूसरा चैनल में एनडीटीवी लोग भी मेरे से इंटरव्यू लिया था, वो लोग को वल्सन सर बोल रहा था कोच मना किया। डॉक्टर निकोलाई से, निकोलाई का पूछा था पानी रखना है कि नहीं, रिकवरी ड्रिंक्स रखना कि नहीं, डॉक्टर निकोलाई, इसमें कोच मना किया तो फिर फेडरेशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोच ही सबसे बड़ा होता है, कोच सबसे बड़ा फेडरेशन नहीं है। जैशा, ये तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा दैट आप तो बहुत ही ब्रेव हैं और आपने 42 किलोमीटर्स मैराथन ख़त्म किया है जब आपको बेसिक पानी अवेलेबल नहीं था और आप वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए 3 घंटे के लिए, एंड यू वर केप्ट ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस। आपको आइस में रखा वहाँ पे 3 घंटे तक, आप बेहोश थे बिल्कुल। उसके बाद ये भी हमने सुना है कि आपको 7 बॉटल ग्लूकोज और 3 बॉटल सोडियम डाला, उसके बाद आपको होश आया। आफ्टर दैट यू गॉट कॉन्शियसनेस। तो ये तो देखिए जैशा जी, ये तो इंडियन ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए बेसिक पानी रखे। अभी ये मैराथन होने के बाद ये कहना कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, इतने ऑफिशियल्स वहाँ पे हैं, कोई एक पानी नहीं रख सका आपके लिए 42 किलोमीटर रेस में, और वहाँ पे 42 डिग्रीज टेम्परेचर था, मैंने सुना है। जी 12:30 मेरा रेस फिनिश हो रही थी। 12:30 मीन्स आप बताओ, 12:30 अंडर द सन कोई भी भागने में कितना धूप हो जाता है, क्या हालत होता है। अब नॉर्मल एक इंसान भी इतना टेम्परेचर में वॉकिंग नहीं कर सकते, टेम्परेचर में हम भाग रहे हैं, तो विदाउट पानी में 7 किलोमीटर मीन्स एवरेज 32 मिनट है। हम लोग 32 मिनट में एक बोतल में पानी ले लें, एक बोतल में स्पॉन्ज ले लें, कितना मिनट, 200 मीटर के अंदर ही पानी खत्म हो जाती है हमारा, आधा लीटर पानी, और एक स्पॉन्ज में कितना देर हम भाग सकता। मैं तो ये कहूँगा कि आपने जैशा, मैंने आज प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया तो मैंने एक बात कहा था, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों, 2 लोगों को मेडल मिला, बहुत लोगों ने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि बिल्कुल मेडल के करीब आ गए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े चैम्पियन हैं, एंड हम तो पूरा देश आप पे बहुत, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपने जो रेस ख़त्म किया उस सिचुएशन में, यही बहुत बड़ी बात है। और आपने अपने लाइफ को रिस्क लेके देश के लिए, जैशा, अपने लाइफ को रिस्क लेके देश के लिए आपने दौड़ा। आप 3 घंटे बेहोश रहे, ये मैंने आज तक तो नहीं सुना है, और हमारे इधर वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू जैशा। पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, मगर हम भी अपने देश को वी कैन फील फॉर व्हाट यू प्रोबेबली गॉन थ्रू। जी जैशा जी, इसी मोमेंट में अगर मैं मेरे घर के लिए और मेरा फैमिली के लिए भाग रहे तो मैं 100% छोड़ देगा था। अगर मैं पैसा के लिए भाग रहे एक मैराथन है तो भी मैं 101% हालत में छोड़ देगा था। अगर मुझे 1 करोड़ रुपया देगा बोलेगा तो भी मैं एक कंपटीशन फिनिश नहीं करेगा था। बट मेरा थिंकिंग में इतना ही है ना, मैं अपना कंट्री को बेइज्जती नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि ये ओलंपिक्स में जाके अगर मैं आधा रास्ता में छोड़ दिया तो मैं मर गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मैं फिनिशिंग लाइन में भगवान से इतना ही मांगती थी, भगवान मुझे फिनिश कराओ, फिनिशिंग लाइन में मैं मरने दो, बट मुझे आधा रास्ता में नहीं, इतना मैं गिरूंगी तो भगवान मुझे उधर में नहीं गिराना, मुझे गिराएगा तो मुझे फिनिशिंग लाइन में गिरना, इतना ही प्रेयर था। अगर ये एक नहीं इधर देखिए जैशा जी, नहीं भागेगा था। जैशा जी, मैं आपको देखिए जी, पहली बात है आपने खुलकर बोला, उसके लिए सारे व्यूअर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। व्यूअर्स को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राइट नाउ देयर इज अ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया has put out a statement. Look at how these officials they cover themselves.
They are saying the two athletes, Miss Jaisha and Miss Rao, declined the offer and informed the Indian team manager they don't require personalized drink. And if they at all required it during the race, they would use the drinks available by the organizers. It is so amazing here. It's so amazing here that this Athletics Federation of India is giving reasons why they did not give her water. वो कह रहे हैं जयशा जी कि आपने खुद बोला मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं बिना पानी के दौड़ूंगी, और आपने ऐसा बोला कि मुझे पानी नहीं चाहिए? किसी को बोला आपने कि मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं बिना पानी का दौड़ेगा? ऐसा बोल सकता? 42 किलोमीटर भागना एथलेटिक कैसा मना करेगा पानी नहीं चाहिए? आप इतना बात मुझे बताओ, कौन बोल सकता वो मुझे पानी नहीं चाहिए? नहीं, ये लोग देखिए जयशा जी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन हैं और आपने देश के लिए दौड़ा और आप 3 घंटे बेहोश रहे जब लोगों ने बोला कि आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू गेट कॉन्शियसनेस। ये लोग बोल रहे हैं, और आपको ये लोग बोल रहे हैं कि आप पहले भी बोलते थे कि आपको कभी पानी नहीं चाहिए और हमको इसलिए पानी देने की जरूरत नहीं है। नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं इतना बड़ा झूठ किसी को मैं नहीं बोल सकता, और नहीं तो इतना बड़ा झूठ कोई बोलना नहीं, क्योंकि ये मेरा लाइफ है। मैं कभी ऐसा नहीं बोला, ना मुझे कोई पूछा मैं ना कोई मीटिंग में गया, एक बार भी मैं मीटिंग में भी नहीं गया। उधर में कोई मीटिंग चल रहा है और हमारा हर मीटिंग कोच अटेंड किया था। हम एथलेट 3 एथलेट ललिता बाबर और सुधा सिंह, ओपी जैशा, ये 3 एथलेट एक भी मीटिंग को गया नहीं है हमारा कंपटीशन खत्म होने के टाइम तक। और हर मीटिंग में हमारे कोच जाता था और उधर में जाकर बोला हुआ है इन लोगों के लिए पानी नहीं चाहिए, ये लोग के लिए पानी नहीं चाहिए। देखिए जयशा जी, ये लोग जो है ना, ये जो ऑफिशियल्स हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं और ये अपने आप को कवर अप करने के लिए किसी को भी झूठा बोलेंगे, मगर हम आपको बिलीव करते हैं। आपने देश के लिए दौड़ा है, जो आपको झूठा बोले सर, ये इंडिया का इमेज है, इसमें अपने कंट्री के इमेज में इसलिए भागा। अदरवाइज मैं बोला ना, मैं ये एक प्राइस का कंपटीशन तो मैं नहीं मरूंगी थी इतना, और नहीं तो मैं आज मेरे लिए खुद के लिए भी मैं नहीं कर पाएगा था ये कंपटीशन। मैं पहले छोड़ के चलाएगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं भागू ना भागू, बट ये मैं मेरे लिए नहीं भाग रहे। इतना करोड़ लोग मेरे लिए देख रहे था, इसलिए मैं भाग के फिनिश किया। अभी वो लोग बोले पानी नहीं रखना, जैसा बोला नहीं, मैं एक बार भी बोला नहीं ना, मैं एक बार भी पूछा नहीं कोई पानी रखना है कि नहीं। बट ये लोग पूछा कोच को, कोच बोला, कोच मना कर दिया, डॉक्टर निकोलाई मना किया। बट इतना सोचना है डॉक्टर निकोलाई नहीं भाग रहे, ओपी जैशा भाग रही हूँ। जैशा, हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप खुलकर बोल रहे हैं, आप किसी से मत डरिए, सारा देश आपके साथ है। नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है, हम किसी से, क्योंकि मैं मर गया तो इधर में कोई ना फेडरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना साई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना बिल्कुल ओनली लॉस होता है मेरा हस्बैंड के लिए, मेरा मम्मी पापा के लिए बस। क्योंकि ये लोग इतना ही बोलेगा, हाँ वो तो मर गया, ठीक है 1 मिनट उसके लिए करो, कल कोई अवार्ड देगा मेरा नाम है। मुझे कौन सा डरना है? मैं 2005 से शुरू होकर 2006 में एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ, 2014 में एशियन गेम्स मेडलिस्ट हूँ। आज तक मुझे एक अर्जुन अवार्ड तक भी नहीं दिया। इतना हाईएस्ट, इतना परफॉर्मेंस कंटिन्यू 10 ईयर 11 ईयर कंटिन्यू परफॉर्मेंस एक भी एथलीट नहीं होगा आज इंडिया में। मैं कौन सा इवेंट में खराब है? मैं 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कोई भी इवेंट भागा, वो ऑलराउंडर एथलीट हूँ मैं। हर इवेंट में मैं सक्सेस एथलीट हूँ। बट मेरा परफॉर्मेंस कोई नहीं देखा, मेरा दुख कोई नहीं देखा, ना मेरा डिपार्टमेंट देखती हूँ, कोई नहीं देखती हूँ मेरा दुख। मैं ऐसा, मुझे कुत्ता का तरह भगाती हूँ, ये इवेंट करो, वो इवेंट करो। इधर मैं कोच की इवेंट चेंज करती हूँ, तुम ये कोच का साथ जाओ, ये कोच का साथ जाओ, मुझे यही बोलती हूँ। मेरे टैलेंट क्या है? आज तक सब दुनिया बोलती है जैशा के अंदर बहुत टैलेंट है, बट मेरे टैलेंट ओरिजिनल में क्या है? 2014 एशियन गेम्स में मैं 1500 मीटर में मेडल है, 2 महीने के अंदर मैं 42 किलोमीटर में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। किसी से पॉसिबल है इतना बड़ा काम? 1500 मीटर कहाँ है, 42 किलोमीटर कहाँ है? इतना करके भी मेरा बस कोई नहीं देखता है। सबको अर्जुन अवार्ड मिलती हूँ, सबको अवार्ड मिलती हूँ, मैं बस सब चीज में पीछे क्यों? मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है क्यों?
1 साल का 2 साल का परफॉर्मेंस में सबको अर्जुन अवार्ड मिला। मैं 2005 से हो गया, आप इंक्वायरी करके देखो 2016 तक मैं कंटिन्यू में मेडलिस्ट हूँ, हर जगह में मैं मेडलिस्ट हूँ। नेशनल में इतना, मैं नेशनल रिकॉर्ड और मीट रिकॉर्ड इतना ब्रेक कर चुका है। ये लोग क्या दे कि लोग सबको सब अवार्ड दे रहे, सब कुछ दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मैं इतना बेकार एथलीट हूँ? ये लोग सब मेरे ऊपर क्यों में एक्सपेरिमेंट कर रहे? कभी कभी वो लोग मुझे 1500 मीटर में कर रहे, कभी कभी 42 किलोमीटर में कर रहे, कभी 800 में ट्राई करने को बोल रहे, कोई कभी स्टीपल चेस में भी मैं सक्सेस हूँ। हर इवेंट में मुझे ऐसा ही लोग क्यों कर रही हूँ? कोई कोच कोई मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं बिहेवियर करता है? जैशा, पता नहीं आज जैशा ये प्रोग्राम कौन देख रहे हैं, मगर अगर कोई सरकार में देख रहा है, कोई ओलंपिक एसोसिएशन में देख रहा है, अगर कोई पावरफुल पोजीशन ये प्रोग्राम देख रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप वहाँ पे, आप जो 18th है मैराथन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 42 किलोमीटर्स आपने दौड़ा, पानी तक नहीं दिया गया। अगर ये इतना बड़ा देश आपको मैराथन के समय में पानी नहीं थे और इसके बाद बोले कि आपने बोला कि पानी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि if our country has come down to this, where our entire sports fraternity comes together to give reasons why they can't give a glass of water, a glass of glucose or a fruit to a marathoner running a race, if this is what Indian sports comes down to, then I don't know. I want one of those officials, जैसा इनमें से एक भी ऑफिशियल ना 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाएं बिना पानी के और बिना ग्लूकोज, 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाएं। ऐसा ही बोलते रहती हूँ, सब लोग हमारे लाइफ को मजाक उड़ाती हूँ। ये ओलंपिक्स में ये सब नेता ऑफिशियल्स जाके वहाँ पे पार्टी करते हैं, बहुत लोग सेल्फीज लेते हैं और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ। आज ये जो एग्जाम्पल है ना जैशा जी, आपके बारे में आपने जो आके खुल के बोला है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। कई एक्सपर्ट्स हैं पैनल में, आप रहे प्रोग्राम पर। नहीं है, मुझे एक गिलास पानी नहीं दे रहे लोग, मेरे लिए क्या हेल्प करना लाइफ में? मैं इतना ही सोचती हूँ, कोई जगह में मुझे, मैं हर जगह में ऐसा ही हो रही है। मैं कल मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा था? ये लोग बोलेगा हम लोग को ये रूल नहीं था पानी रखने के लिए, वो नहीं तो ठीक है, ये लोग नहीं रखा। उधर में रियो भी अच्छा सर ये अरेंज नहीं किया, रियो भी 5-6 किलोमीटर में 7-8 किलोमीटर में एक ही बार पानी रखा था। नहीं, रियो के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कह दिया था कि हर 2-2.5 किलोमीटर में हर कंट्री को पानी रखना चाहिए, उन्होंने कह दिया था। हाँ। और आपको 8 किलोमीटर दौड़ना पड़ा 1 ड्रॉप पानी के लिए। ये सारा कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के रूल्स के नीचे लिखा हुआ है कि हर कंट्री को अपने एथलीट के लिए 2-2.5 किलोमीटर पे पानी रखना चाहिए। अगर हमारे ऑफिशियल्स इतने ही बेकार हैं कि वो नहीं रखे और उसके बाद बोल रहे हैं कि अरे भाई एथलीट ने खुद नहीं मांगा, उनको कुछ पता नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में कि एथलीट कैसे दौड़ता है। मैं हमारे यहाँ पे कई वो लोग इसलिए तो अभी वो लोग बोल रहे हैं, तो मेरा कोच मना किया हुआ है इसलिए नहीं रखा। I can't believe this. विश्वास नहीं हो रहा। इतना सीरियस था, मैं मर गया तो ये लोग यही बोलेगा कोच बोला था इसलिए पानी नहीं रखा, यही रीजन बोलेगा था। ये आपके कोच को ना स्केपगोट बनाया जा रहा है। आपके कोच पर सारा कुछ दोष और ब्लेम डाल के खुद अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है जैशा जी। ये तो आपको कोई भी बचाओ, कोई भी ये वाला करो, बट किसी एथलीट के साथ ऐसा नहीं होना, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत किया, मैं कितना मेहनत किया मुझे पता है। सब लोग सोने का टाइम 350 को उठ के, मॉर्निंग 350 को उठ के हम लोग प्रैक्टिस करता था, सबका पता है वाला बात है। 350 का मॉर्निंग उठेगा, इतनी इसी वाला काम नहीं है। 3 बजे उठेगा तो 350 को ग्राउंड में प्रैक्टिस को जा सकता। सब लोग सोने के टाइम इतना कोल्ड में हम लोग ऊटी में प्रैक्टिस करती थी। उसका बाद में शाम को इतना 45 किलोमीटर हर वीक करती थी। 280 किलोमीटर हम लोग मैं पर वीक प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद में मेरा रिजल्ट ये है। बट कोई हमारे लाइफ तो गारंटी नहीं है। अभी अगर सब लोग मिलते हैं, जैशा का मेडल मिला तो जैशा का मेडल है, वो इंडिया का मेडल नहीं काउंट होता है। जैशा का मेडल मिला तो जैशा का मेडल है, इतना ही लोगों का काउंटिंग है। भी बात करना चाहूँगा रमन मलिक, स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी फ्रॉम हरियाणा, एबी सुबैया, अर्जुना अवार्डी ओलंपियन, आशुतोष शर्मा, चेयरमैन ऑफ द IOA affiliation committee, अनूप नारंग of the Badminton Association of India, and Professor K. Rangarao, Vice President of the Athletics Federation of India.
On the other side, Kishore Bhimani, senior sports journalist, Bijon Mishra, consumer voice, citizen, Murad Ali Khan, Commonwealth Games gold medalist, Aparna Popat, Olympian, and Somdev Devbarman, Olympian and champion tennis player. Thank you very much. First, Professor Ranga Rao, can you hear me? Professor Ranga Rao, can you hear me? See, You are these international events or Olympics, the organizers will provide water facilities. no, organizers will provide water every 8 kilometers. The representatives of the country have to give energy supplies and water every 2.5 kilometers. What are you talking about? Yes, that is. No, what she is saying now. So Jaisha, one second. We cannot comment on this. No, why can't you commit? No, why can't you commit on giving? I'm sorry. Why can't you commit on giving one glass of water to a marathoner? Please hear me. No, I'm hearing you, but I know the rules. What has happened because. No, please listen to me. Because this is the responsibility of the officials who have gone with them. And naturally they are. Yeah, but then why, you are from the Athletics Federation of India. No, sir. You have given out this press release. No, sir. You have given a press release calling a champion athlete a liar. I'm really sorry. You can't do that. You have said that she said she didn't want water. Jaisha ji, आप बताइए. एक मिनट, Jaisha ji, आपने no, I'm sorry. तो उनका responsibility है. We have to keep our own drinks for these athletes. हाँ तो किस नहीं, but 1 second, 1 minute. In your press release, you are from the Athletics Federation of India. आप Athletics Federation से हैं. आप वाइस प्रेसिडेंट हैं. आपने क्यों बोला कि जैशा ने बोला कि मुझे पानी नहीं चाहिए? जैशा ने तो नहीं बोला. आपने पानी नहीं दिया. जैशा ने कभी नहीं बोला मुझे पानी नहीं चाहिए. जैशा आपने कभी बोला मुझे पानी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कोई पूछा ही नहीं है, मैं बोला भी नहीं है पानी नहीं चाहिए, बट मेरा कोच बोला, ये लोग वही बोल रहे हैं, डॉक्टर निकोला ही बोला, बट डॉक्टर इतना आप लोग याद रखना, डॉक्टर निकोला ही नहीं भाग रहे, जयशा भाग रहे। That was after everything was over. Yeah, one second. हम बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमको ऐसा हम किसी से इतना मुझे बहुत परेशान हूँ क्योंकि आप लोग मेरा हालत देखो, इतना देखो मैं क्या हो चुका है। आप लोग सब लोग अपना साइड क्लियर करती हूँ, इतना बस सोचो मेरा हालत क्या है। मुझे कुछ लॉस होगा तो मुझे बस लॉस होता है, किसी को कुछ नहीं लॉस होता है। No, one second. रंगा राव जी, आप वाइस प्रेसिडेंट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मैं आपको कह रहा हूँ, आप इमीडिएटली प्रेस रिलीज एक इशू कीजिए और बोलिए हमने झूठ बोला हमारे प्रेस रिलीज में। हमने प्रेस रिलीज में एथलीट को अटैक किया। रिजाइन कीजिए। Now one second, who's saying that? One second, who's Bijon Mishra is saying? Bijon Mishra, go ahead. क्या कह रहे हैं Bijon Mishra? What are you saying, Bijon Mishra? I am saying that he should put his papers now. He should resign. I'm going to open up the phone lines on this. Yeah, absolutely. Murad. I said the entire Athletic Federation of India should quit right now. Murad. They are taking it as a joke, playing with the life of an athlete. An athlete's life is more important than anything else. They are just making an excuse. The best thing to do that all the officials get together now, and since there is a foreign coach, it's an attempt at defaming an athlete. Make him into a scapegoat. No, these are the people who take responsibility every time. No, one second. Just 1 minute. Ashutosh Sharma, who's chairman of the IOA affiliation committee from Jammu, can you hear me? Yes, of course. So, should the entire Athletics Federation of India resign for trying to defame a champion athlete? Actually, it is only in the morning that I came to know the whole episode. It never came in the newspapers and all that. But whatever athlete is saying, if it is true, it is really shocking. Well, absolutely it's true. No, absolutely it's true. She's not been given water. One second. You are part of. Are you, Mr. Ashutosh Sharma? Are you also part of the Athletics Federation of India in any way? Of course, I am also associated with the Athletics Federation of India. Then quit. Then I'm telling you, quit. You quit in protest in the way. You quit right now in protest. Bijon Mishra says you quit. I say the entire Athletics Federation of India should quit at the way they have treated OP Jaisha. No, that is quit. How could you put out? How can you put out a press release? How can you put out a press release saying that she said she did not ask for water? This entire press release is an attempt at vilifying a champion athlete. OP Jaisha is a champion. You try running 1 kilometer without water in 42 degrees heat. I'm sorry. Professor K. Ranga Rao and Ashutosh Sharma. 1 second. Let's get the others in. Murad, Aparna Popat and Somdev Devbarman. 1 second. Aparna.
Aparna, what do you think about this? You read this press release, Aparna. I say that You read this press release, Aparna, and tell us what you think. See this paragraph. No, 1 second. It is not that I'm sorry, Kishore Bhimani, this has gone too far. This has gone too far. This has gone too far. No, I'm sorry, no. How can you say that OP Jaisha is speaking an untruth? Kishore Bhimani. I would like to say, if they allow me to speak, I'd like to make 2 very quick points. There's no question of agreeing with what the Athletic Federation press release has told you. The other thing is, even for some reason there was a misunderstanding and the athlete says, I don't want water. It is up to the organizers, it's up to the Athletic Association people, it's up to the chef de mission and all the people to make sure that this is not the right thing. We have to do what every other country does. No. Have these little booths. No, why can't they get give water? glucose? Why can't they give banana? water? Anup Narang. Otherwise the athlete can get dehydrated and die. Anup Narang. I mean, Anup Narang. That we won't give them. Anup Narang. Yes. Anup Narang. Yes. Arnab, you will notice that whenever Sindhu, Saina or Srikanth were playing the badminton matches, both our coaches were always there. And after every 11 points, they were going and giving water, and they were also giving the ice massage on the back and the head. First of all, here's that during all our. I understand, Anup Narang, what you're saying about that the Badminton Association did a good thing, but I am saying today that we have a champion called OP Jaisha. We have a champion called OP Jaisha who threw a 42-kilometer run in Rio where the temperature is 42 degrees, did not get water. It is supposed to be provided by her country every 2.5 kilometers, and this Athletics Federation of India is putting the blame on her. I am saying today, why do all these people go to Rio if they can't give water to a marathoner? No, why do these people go to Rio if they can't give... Her coach should have coordinated the race. You blame the coach. What about the officials? Coordinated the race and the plan for the race. What do you know? You mean to tell me that those from the Athletics Federation of India don't know that a marathoner needs water? You need a coach to tell you this. Do you want us to go to Rio and put it out an application? I'm sorry. You put an application, put it in triplicate, photostat it 5 times, get it self-attested, go to a Sarkari official, go to a bureaucrat, get it attested, and then say, sir, please give me some water. Pani dijiye. What rubbish is this? You want to introduce this form of bureaucracy in the Olympics? This is why. No, you want to introduce this bureaucracy in the Olympics? Sack them. All the Athletics Federation of India should quit. Sack them. Should quit. And Bejon Mishra, everybody is with you tonight. Let's get Aparna Popat and Somdev Devbarman on this. I have not seen a more shocking incident than this. Aparna, please. Aparna, you've heard her. Yeah. You heard her. She's given a detailed account. You've seen the press release. First of all, it's very, very hard to see a champion athlete break down like this emotionally. Yeah. It's really hard. And then comes a statement like this that gets you angry. Absolutely. And very, very angry. I mean, just, to point out a bit. Let Aparna complete. But no, let Aparna complete. The statement clearly says Miss Jaisha and Miss Raut declined the offer and informed the Indian team manager that they didn't require any personalized drink. Yeah. And if at all they required it during the race, they would use the drinks provided. Where's that if? You do require hydration during a 42-kilometer race. Yeah. And you don't require it when the booth is available and when you happen to chance upon it. This is a marathon. This is the Olympics. And it's a strategy that goes in when you're training. You run at a pace because you know you're going to refuel at a certain time. It's all a part of the strategy. So if the coach has been training this girl, we're not even here talking about high performance. We're talking about apathy at a very humane level. No. This is just It is like saying, Murad. It is like saying, I'll just get Somdev in. It's like saying Somdev Devbarman is going to play, a tennis match at the Olympics, and Somdev hasn't asked for tennis balls. So Somdev hasn't asked for tennis balls, so we didn't give him any tennis balls. Or for that matter, tomorrow, if Aparna Popat is playing a game that she's playing badminton, she didn't ask for a shuttlecock.
this is as ridiculous as this is, Somdev. हाँ, पहले जयशा जी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जयशा जी, आपको आवाज आ रही है? सोमदेव देवबर्मन है, चैंपियन टेनिस प्लेयर, कुछ कहना चाहते हैं आपको? प्लीज गो अहेड सोमदेव। मैंने बहुत ट्रेनिंग की ट्रैक में। मुझे पता है कि मैं टेनिस खेलता हूँ, लेकिन हमारे ट्रेनिंग के लिए हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं ट्रैक में। कभी माइल भागते हैं, कभी 800 400 सब कुछ भागते हैं। और मुझे पता है कि एक लैप के बाद भी मुझे इतना प्यास लगता है और इतना टायर्ड हो जाता है कि मुझे पता है कि देयर इज नो वे दैट एनी एथलीट ने डिक्लाइन किया। मुझे पता है और मैं हो ही नहीं सकता है। हाँ, हो ही नहीं सकता है। और 100% आपकी विश्वास है, 100% वी बिलीव एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज हमें पता है कि कोई एथलीट अभी ऐसे कभी कुछ नहीं डिक्लाइन किया। देयर इज नो वे an athlete who trains at a high level is going to decline a basic necessity like water. Somdev, this is simply putting pressure and saying that I put the blame on you. I was just going to say this is the blame game. Yeah, it's a blame game. One guy is pointing fingers at one guy, the other guy is saying I didn't do it, it is his fault. Yeah. And then everything goes away. And then nobody's to blame and nothing changes, and the state of our athletics is just completely ruined. You tell me, Somdev, since you've trained and you know this. Because they know that they have gooped up. Tell me. They know they have gooped up. No, when you don't have water on a 42-kilometer race in 42 degrees heat, is it possible? It requires you need to be a superhuman to complete the race. It's not. Somdev? The fact that she's completed the race itself. No, it's a miracle that after the race she has survived. After having 3 hours, that's what she said. She said it's a miracle. She said for 3 hours she was flat on an ice slab. You know, when you are competing in a race, a marathon, the coach and no coach in the world will say that she doesn't require refueling. There are recovery drinks which are available to the athletes, designed for the athletes, which are given every 5 kilometers from the starting point. Yeah. And after every 2.5 kilometers, there is water which is available from the organizers. But the drinks are specific to the athlete, and until the athlete refuels herself, it is impossible for her to again pace for the next 2.5 3 kilometers. These officials, I'll tell you, so and Raman Malik, let me tell you, your leader, what's his name? Vij. What's his name? Anil Vij, right? I'm telling you, Raman Malik, that when Anil Vij would walk 500 meters to a shop, I'm pretty sure there were 4 officials there with him to give him water. कि मंत्री जी आपको कहीं प्यास तो नहीं आ रही है? No, किशोर भिमानी, it's the truth. It's the truth. कि कहीं आपको प्यास तो नहीं आ रही है, आप इतना शॉपिंग कर रहे हैं? But you know what? नहीं, one second. Mr. Vij said on your program. हाँ. Arnab. Yeah. Yeah. Arnab, he said on your program that he was going to Rio so that he and his colleagues from Haryana could observe how the other countries treated their athletes. Yeah. Now they will come back and tell their assembly that they give water, they look after their athletes, they are concerned about their athletes, and we have found it out. So their fact-finding mission has been successful. Yeah. You see, the fact is simple. Raman Malik, look at the situation. You're a politician. Politicians have done nothing for sport in India. And OP Jaisha is an Olympian. She's risked her life to complete a marathon. The politicians and officials didn't give her one drop of water. Now they're issuing this press release. Can you just pass it? They're issuing a press release saying she didn't ask us for water. So Sports Minister of India is going there, doing selfies, etc. Then Anil Vij goes for a junket. You know, some radiologist's son of the Vice President of Indian Olympic Association becomes the Chief Medical Officer. And a marathoner is not given water while running for 42 kilometers. What is the moral of the story? She was unconscious for 3 hours, by the way, Raman Malika. I would be most interested to answer you, Arnab. Yeah, please do. Please do, I'm not stopping. Arnab, I would be most interested to give you an answer, provided now that I've patiently listened to everybody, I would request you to listen to what is being answered. Don't give a long introduction, please. You can just begin by saying sorry to her on behalf of all politicians. No, you have to listen, Arnab. If you want an answer, you must listen. Have patience.
It is a virtue of What wise patience? man. We've run out of patience. Now, How can you talk to first me of like all, that? let me- Have patience. And listen to We've run out of patience. Yes, no. Just stop the The snobbery way- out the way here. you talk to No. everybody, I'm talking telling to you. in I'm the telling same you. manner, These but in a netas, very these polite netas way. who make a beeline, spend crores of rupees to I- go to Rio to cheer our athletes. Did they think What that about- there is an what about athlete? your beeline? Pardon me? Do you work as a peon in your office? Mr. Raman Malik, listen. Mr. Raman Malik, don't show any disrespect to the athlete out here listen on the to program. somebody, You sir. listen to me. I am You not. listen to me, Raman Malik. I'll I open am the phone not. lines. You'll get a sense of what You the have people not of this let me country think. speak a single word. When OP Jaisha has fainted in the You course have of a not let marathon. me speak She's a fainted single in the course of a word. And you have marathon. started She has shouting. fainted in the course of a marathon. Do you understand what that I means? have not done anything. Do you know what Stop it means to shouting. risk your life? I have not put For the you on country. fire, Arnab. Please calm down. No, Have a you glass calm of down. water, calm You down. calm down and show humility. And listen, Show humility. at least let me speak. I have not yet started. Yeah, because you people only do junkets. Please. Now, I want to Calm down and listen to what I have to say. This is giving a long introduction. I don't have time to waste today because there are a lot of callers who want to say something to OP Jaisha. See, the simple thing is the ministry is there to provide the fund and do the administration. The basic running the operations of the entire thing is done by the federation. Okay. And here the minister, the national sports minister, has very categorically said No, that don't he give is me going to a look into the standard matter. tripe. Whoever is the responsible would be taken to task. Has he not said Do you realize that she was risking her life, that she was unconscious for 3 hours? Do you realize that? I realize Mr. Subaya from Chennai, you tell me today. I would not realize. No, I want Mr. Subaya to come in. Mr. Subaya, Arnab, if I would not Mr. have Subaya, you're an realized- Arjuna awardee and an Olympian. You tell me here today. If I would You have tell me not today, Mr. realized, Subaya, Arnab, Mr. Subaya, should the Athletics Federation of India apologize? Should the Athletics Federation of India apologize for treating an athlete like this? If not, quit. Yes, en masse. Yeah, definitely, Arnav. If you see that, I agree with the Aparna very well. It's not only the federation people, it's her coach and the support staff who's supposed to be looking after her. They're responsible. They, in the training, they don't know her capacity when she has to be rehydrated after how many. You tell me. No, one sec. Mr. Subaya, 1 minute. Mr. Subaya, 1 minute. This passing the buck, passing the parcel. You know, I'm not playing a game here on Newshour. 1 minute. Mr. Subaya, 1 minute. Am I playing a game here on Newshour? Officials, coach, player, tweak it, lawyer, fact, bureaucrat, politician, mix it up. Then confuse the athlete, change the facts and try to save yourself. You know something? A criminal case should be filed against the Athletics Federation of India. This group calls itself Athletic Federation of India. It's a comedians club. These people are saying that we need to be told that pani nahi manga to pani nahi diya. This is the Athletics Federation of India. The pani nahi manga. Marathoner does not need water. Play with the lives of the people. You play with the life. Absolutely, Bijon Mishra. Listen to me, please. Absolutely, Bijon Mishra. They played with Jaisha's life, and Jaisha is right. She says, I don't know whether I was. Mr. Raman Malik, be quiet. Arnab, can I have Mr. Malik, no, I'm sorry. I'm opening the lines. Can I have 20 seconds? No, you can't have 20 seconds. You can't have 20. Our first caller is Raman. Raman, 1 second. Everybody with a common sense. Hello. Yeah, there's no common sense these officials have. Hello. Raman, hi, good evening. Go ahead, Raman. Go ahead, Raman. I can hear you. Can you listen? Yeah. Or not? Yeah, go ahead, Raman. Yeah. Thanks. Many times I tried to call you, but okay. Good. I just want to apologize to this lady. Great. We have failed you as a nation. And whatever these politicians have done, that's horrible. And they can find excuses. Maybe you were not alive today. Thank God. I pray the Almighty, and I hope things will improve. Right. I don't know really. Right. I don't know. Right, Raman, 1 second. Before I take it forward, K. Ranga Rao of the Athletics Federation of India. A lot of people are responding to this bunch of lies that you put out, Mr. Ranga Rao. This bunch of lies. Since when are you Vice President of the Athletics Federation of India? Professor Ranga Rao,
Professor Rangarao, since when are you Vice President of the Athletics Federation of India? Pardon? Since when are you Vice President of the Athletics Federation of India, Professor Rao? I was there recently held elections. I became Vice President of the Federation. And what are your qualifications to represent the athletics, all the athletic sport in this country, may I ask you? Yes, I represent my state. I am there as a Vice President. I have been actively involved in the activities of my federation. Have you been an athlete in the past, Mr. Rangarao? Have you been an athlete in the past, Mr. Rangarao? Yes, please. I was a footballer and athlete also. Okay, so when you were a footballer, did you ever drink water during a football match? Did you drink water in the drinks break? Mr. Rangarao, listen to me. When you were a footballer, did you drink water during the break? Again? Pardon again? Did you drink any water during the break? During a football match? No. You didn't drink water? Did you drink water during the break? We don't take. If it is needed, then I will go out and take permission. Okay, so you don't ever drink water? See, here whatever complaint has been lodged, because we are not present there, it is the responsibility of the officials who is given this? Mr. Rangarao, I'm telling you. Mr. Rangarao, listen. Mr. Rangarao, why are you holding on to that position? You listen to me, Mr. Rao, and don't get irritated with me, because I am getting very irritated with what you've gone through. You should know you are a Vice President of Athletics Federation of India. You see the rule books, go and read it today under rule number 240 of the International Association of Athletics Federation rules. Now you will say I am not able to hear. Mr. Rangarao, the water should have been provided by the officials. You did not provide it to them. Now you are going and putting out a press release saying misleading and incorrect statement made by athlete OP Jaisha. See, the organizers provide, but we also provide as per the rules. So water is provided. What rules? What rules? No, what rules? I'm sorry you are wasting time. One second. Minesh is calling in. Minesh is calling in from Dubai. Hello. Hi Minesh, go on. Go ahead Minesh. Hi, good evening. Hi, good evening. Yeah, good evening. Yeah. Thank you very much for taking my call. Yeah. Go ahead. First of all, a big salute to OP Jaisha. Yeah. Olympian who represented our country. A big salute to her, first of all. Hello? Yeah, I just want to convey that. Jaisha, आपको आवाज आ रही है? दुबई से एक कॉलर है, कुछ कह रहे हैं आपको. बहुत सारे पहली बात जयशा, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूं. जयशा? हाँ जी. जयशा, इस वक्त सारे देश भर से फोन्स आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में, और बहुत लोग देश से और विदेश से फोन करके बोल रहे हैं कि आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं. आपने जो आपके साथ है सारे देश भर के लोग. जी नहीं, मैं इतना अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ. गुस्सा इतना मुझे नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं इतना परेशान है. मेरा इतना कंपटीशन करके मुझे अप्रिशिएट नहीं हो रही. लोग गुस्सा इतना क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. हेलो जी बिल्कुल. लोग इतना गुस्सा में क्यों बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहे हो. जी मिनेश कुछ कहना चाहते हैं आपको? इसमें कोई मैराथन रनर है नहीं है, किसी का पता चलना कौन मैराथन भागे उसका पता चलता है फीलिंग क्या होता है, और कौन स्पोर्ट्स के उसको पता चलता है स्पोर्ट्स क्या होता है. मैं इतना परेशान हूँ, मेरा हालत इतना खराब है, तो तुम जल्दी रिकवरी होके आ जाओ, नेक्स्ट के लिए तैयारी करो. नहीं बोल रहे ये लोग अपना साइड इतना ये वाला कर रहे, किस लिए मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि मैं अभी तक ना मेरा फेडरेशन के लिए, ना मेरा साई के लिए, ना मेरा मिनिस्ट्री के लिए मैं कोई खराब नहीं बोला. बट इन लोग किस बात में इतना गुस्सा हो रहा है, इतना टेंशन इन लोगों का किस लिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है.
मुराद कुछ कहना चाहते हैं आपको? मुराद अली खान है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है शूटिंग में, कुछ कहना चाहते हैं आपको मुराद? जयशा, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। जितना भी गुस्सा कर रहे हैं लोग, वो आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं जिन्होंने आपको वहाँ पानी नहीं दिया। कोई आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, तो आप उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम लोग सब आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर लोग गुस्सा कर रहे हैं। हम इतना परेशान हो, हम अपना लाइफ में इतना परेशान हूँ क्योंकि हम स्पोर्ट्स करके हम अपना लास्ट मूवमेंट, मैं मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कंपटीशन में, क्योंकि इसका बाद में 1 मीटर भी मेरे चलने को हिम्मत नहीं था, क्योंकि मैं मेरा पूरा दिया। मैं तुम्हारे लाइफ का सबसे 100% कौन सा पूछा तो मैं बोल सकती हूँ मैं ओलंपिक से मेरा 100%, क्योंकि मैं मरने से बस बच गया। मैं इतना सब नहीं था, बट कोई भी मेरा फीलिंग अगर कोई नहीं समझता है शायद मेरा फीलिंग। अब मैं प्रोफेसर रंगा राव से एक और बार पूछना चाहूँगा। प्रोफेसर राव, why is the Athletics Federation of India attacking Jaisha? You should be complimenting her, you should be praising her, you should be saying she did not get water but she completed the race, she's a great champion. Just because she spoke the truth, you want to victimize her, you want to punish her, you want to attack her. You don't think people of India are watching this? They are going to ask all of you to get out, because I'm telling you, Professor Ranga Rao. It's a bad, see. No, is the power has gone to your head? As per the rules allowed, the officials have to provide that. I don't know why. No, then okay. Listen, Professor Rao. Professor Rao, listen. Professor Rao, listen here. If the officials have not done their job, yes. Kishore Bhimani can come in on this. If अगर officials ने अपना काम नहीं किया, तो आप athlete को क्यों attack कर रहे हैं? That's Kishore da. I don't understand. Officials don't do their job. Why are they attacking the athlete, Mr. Bhimani? That's the issue. I don't know. I don't know. No, I don't know why means what? You are the vice president of the AFI. We have allowed this elitism to be created. Oh, I am there. You are somebody there. No, I am not there, sir. Sorry, you are there. Sorry, Mr. Professor Rao, you are a very senior man with great respect to you. You are there. I am not there. I am there in the federation, and all the office bearers are there. We want that the athlete. No, why you think you'll get away by attacking? Such a big event. No, we've I don't know. There should not be. No, Aparna, you've seen the press release. Are you in any doubt? Are you in any doubt about what is the attempt being made here to put pressure on the athlete? Are you in any doubt about this, Somdev and Aparna? Well, I mean, clearly from the way that she's reacting and the way she's speaking, she's so emotional. Forget what it's done to her body. Look what it's done to her mind. Look how scared she is. Yeah. Look how afraid she is. And this is a champion athlete. She's saying, I wanted to go out at the end of my career on a high. The Olympics is supposed to be the most positive experience for an athlete. We train our entire life. Yeah. And they've made it so negative for her. In fact, she almost died. Yeah. I mean, what message are we sending across? And look what has happened here. Yeah. As an athlete, Somdev, under what circumstances is an athlete land up unconscious for 3 hours, put on a slab of ice, saline put, 7 bottles of glucose and 3 bottles of sodium being put? How serious was that situation? I mean, as an athlete, have you ever seen a situation like this जो जैशा ने describe किया? आपने कभी ऐसा situation खुद कभी देखा है? I have never seen anything like this. This is the most severe thing I've ever seen in terms of running, in terms of tennis. Definitely, the maximum you see is a cramp. Maximum. The maximum you see in an athletic game or an event is a cramp. People cramp, but this. That's right. This is very, very, very extreme. It's very serious. Very, very serious. और मैं जैशा जी आपको पूछना चाहूँगा, जैशा जी आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि आप एक मिनट जैशा जी आपको पूछना चाहूँगा, आप 3 घंटे वहाँ पे बेहोश पड़ी रही, 3 घंटों के बाद जब आपको होश आया, उसके बाद आपको कैसी तकलीफ हो रही है और कैसी मुश्किलें आपको आ रही है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोग जान सके कि आपने जान का दाव लगा के आपने किस तरह से दौड़ा। ये होश में आने के बाद कैसी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं आपको,
कितनी मुश्किलें हुई हैं, ये जो वापस आप आए बेंगलोर पहुंचे, आपके लिए जर्नी कितना मुश्किल था, उसके बारे में ज़रा बताएं। मुझे सब उधर में मैं बेशक इधर में था, फिर 1-2 घंटा के अंदर मुझे सब सुन रही थी मुझे, बट बोल नहीं पा रही थी, ना मेरा आईज ओपन हो रही थी। उधर से डॉक्टर्स मेरा फेस में मार रही थी, पैर में मार रही थी, वो लोग मुझे खींच रही थी, सब मुझे पता चल रहे, बट मैं नहीं बोल सकता था, मैं ना आंख ओपन कर सकता था, आईज ओपन कर नहीं सकता था। उसके बाद में एक बार डॉक्टर निकोलाई सर भी आके मुझे खींच रहे था, मुझे फील हो रहे सब कुछ, बट मुझे कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद में बहुत 2-3 घंटा बाद में मुझे होश होगी। उसके बाद में मेरा बॉडी ऐसा पेन हो रही थी, मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता क्या फीलिंग हो रहा है। हर बॉडी मीन्स मेरा हर हड्डी मुझे दर्द हो रही थी। फिर 1-2 दिन के बाद में मैं थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। फिर उसके बाद में मुझे फीवर शुरू होगी, ऐसा रुक के फीवर हो रहे और वॉमिटिंग, ऐसा मीन्स खाना नहीं खा पा रहे। अभी तक मैं एक बार भी राइस कुछ ऐसा चीज़ खाया नहीं था, मेरा कुछ खाने को नहीं हो रहा, खा लिया तो वॉमिटिंग हो जाता है, ऐसा मुझे बहुत अभी तकलीफ हो रही है। और चेस्ट, अभी डॉक्टर को चेक किया, चेस्ट का अंदर मुझे स्वेलिंग हो चुका है, क्योंकि ठंडा पानी में लेटा है इसलिए शायद अंदर स्वेलिंग है पूरे चेस्ट में, और हर बॉडी मुझे ऐसा पेन है, और मेरा पूरा आवाज़ अभी बंद हो चुका है मीन्स बहुत ज़्यादा, और नाक में सर्दी जुकाम, और क्या एक इंसान को होना है, सब बीमारी हो गया हुआ है, यही मैं बोल सकता। बेजॉन मिश्रा, you know, in this case there's only one solution, is there collective resignation of the entire Athletics Federation of India. That's my view out here. Anything less than that will be criminal. No, I agree. I fully agree with you, Arnab. It is time the government took a strong action against all these federations. First of all these federations should get dismantled. जयशा, मैं आपको थैंक यू कहूँगा क्योंकि आप काफ़ी टायर्ड लग रहे हैं और आपको खांसी भी आ रही है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा देर अभी तक नहीं रोकूंगा, मगर आपको इतना कहूँगा कि आज नहीं, एक मिनट, कैन आई से समथिंग टू हर प्लीज विदाउट इंटरप्शन रमन। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा आपको, एक बात आपको कहूंगा जयशा जी, आप 1 सेकेंड बेजॉन मिश्रा, आप जयशा यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सारा देश आपके साथ है इस वक्त जयशा, सारे देश भर से। मुझे पता नहीं कितने एथलेटिक्स फेडरेशन के लोग एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने के लिए, मुझे लगता है जितनी एथलेटिक्स फेडरेशन है उनको आके आपको रिसीव करना चाहिए था एयरपोर्ट पे, आपका ख्याल रखना चाहिए था। मगर मैं कह रहा हूं आज कि आज सारे देश भर से अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया, ओके, फ्रॉम आसाम टू राजस्थान, कश्मीर टू केरला, फ्रॉम दुबई ऑल्सो, दुबई से फोन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहे हैं आज अभी इस वक्त, सब कह रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ जयशा, शी इज अ चैंपियन एथलीट, वी आर प्राउड ऑफ हर। तो इतना मैं आपको कहता हूं, बाकी हम इसके लिए केस को करें। आप अभी टायर्ड लग रहे हैं, आपको खांसी आ रही है, आपको मैं ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू you, I am thankful to you, and Jaisha, I am personally very proud of you. This much I will say this, and I will follow it up, Jaisha. अभी you go and take some. किया मेरे लिए, इतना आप लोग किया, आप सबके लिए मैं आप लोगों के लिए थैंक्स बोलती हूँ, और मैं आगे के लिए मेरा रिकवरी हो गया और नेक्स्ट और एक बार करूंगी स्पोर्ट्स अच्छा से। आप लोगों का प्रेयर चाहिए मेरे लिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, we have our full support. Now Jaisha, you go and rest. Now, okay, now I want to go. Bijanda, what were you saying? Bijanda, we'll take this for 5-6 more minutes. Bijanda, thank you. Yeah. You see, Arnab, it is time now, we as citizens, we make all these people, the so-called officials, understand that we don't want these people to continue all these, luxuries which they do and deny the athletes of their rights. You see, you can imagine all the rules and regulations, they just violated them. And now they're trying to protect themselves by giving a press release instead of trying to say sorry and... No, 1 second, Professor Angarao. Let him complete. Professor Rao. Take some issue and for that you are going beyond the... No, we are going. Who are you to say, Professor Rao? You should resign. The least... Professor Rao, who are you to say we'll take it beyond? We'll take it beyond. You think, Professor Rao, you think any athlete wants to kill themselves?
The complaint we... The least you can do is... Professor Rao, you listen to me. Professor Rao, listen to me. Wait, no, Professor Rao, how did you call Jaisha a liar? How did you call Jaisha a liar? How did you issue this press release? There should be a criminal case filed against the Athletics Federation of India. Who are the liars tonight? You think Jaisha is a liar? You are concerned with all the... I am concerned. Every Indian is concerned. What do you mean? I am concerned. You should be concerned. You should be concerned. You sit on the chair. You are the official. You take the perks. How can you say, how are you concerned? How can you say, how are you concerned? I am concerned. I am concerned that an Indian athlete is not being given water by officials. How dare you say, how are you concerned? I am concerned. You should be concerned. You people use our money. You people are going on luxuries on our money. You people should... No, I'm sorry. We are concerned. We are concerned. We are concerned. I want to know. We are concerned. My country's athlete, Mr. Rangarao, Mr. Rao, listen. Mr. Rao, you're a senior man. I don't want to raise my voice with you, but I'm going to tell you this, Mr. Rao. Mr. Rao, listen. Mr. Rao, listen. I want to know why I'm concerned. I'll tell you. Now listen to me. I am an Indian. Point number one. My country's athlete does not get water. Point number two, okay? My country's athlete completes a marathon in those inhuman conditions. You want to know why I'm concerned? My country's athlete. I am an Indian. My country's athlete goes on a slab of ice, becomes unconscious, risks her life. 1 minute, Mr. Rao, let me complete. My country's athlete is flat, almost dies in an Olympic match, and after that I am concerned because my country's because this Athletics Federation of India calls her a liar. She's a champion. How many of you were there at the airport to receive her when she came? How many of you were there? How can you say, how are you concerned? I'm concerned. I'm very concerned. I'm more concerned than you. All of India is concerned. We want you to all be sacked overnight. I'm sorry, Mr. I'm sorry. You let us down. You people. You people, the Indian hockey team does not get their clothing kit. Boxers don't have t-shirts. OP Jaisha almost dies. Marathoner almost dies. You are saying, how are you concerned? I'm concerned. You should be concerned. You should be concerned. Aparna, how can you say the athletes are suffering at the Rio Olympics? You people are saying, how are you concerned? I'm concerned. I'm concerned because people like Suresh Kalmadi. Exactly. From Suresh Kalmadi to now, I'm concerned. I'm damn concerned because they're looting. You have no idea. Yes, Morad is saying something. We need complete overhaul of the sporting system of India. If we have to survive in sports, we need people who have got the thoughts, who don't even care about athletes' life and leave them for dead on the track. They should just get out of the system. No, I'm also concerned. No, I'm also concerned because attempts are made to say Jaisha has changed her statement. No, I'm telling you, I'm concerned because politicians put pressure and then some people, I don't know why, start messaging and tweeting, oh, Jaisha has changed her statement. What will happen now? Will Jaisha explain? Will action happen? I mean, I'm saying here, it is crystal clear that she has overcome insurmountable odds to complete the marathon. You don't put her through a lie detector test. You should be sorry, and with respect, Professor Rao, you should quit. You should quit as Vice President of the Athletics Federation of India. Don't try and intimidate her. They should be made to resign, sacked. They should be sacked overnight. I'm sorry, Aparna was saying something. Aparna and Somdev, this is getting me very angry here today. I mean, I've been trying to be composed through the whole thing, but it's just too much. When someone says, why are you concerned, Aparna? I mean, why are you concerned? Right. We are all angry. We are all concerned. I think concerned is a very polite word. We should be in panic. We should be in panic, I swear. Yeah, it's just unfathomable as to what is going on, and we can call for the officials to quit, but Arnab, that's a very reactive mode. It's a move that will happen after. What would have happened if she would have lost her life? It will send a message. I agree with you. You need to get systems in place where you have action. Aparna, laws in place. Aparna, I feel so bad that today there are attempts by people, some people who have a habit of not checking their facts ever, go ahead and say, oh, but she's changed her facts. So in other words, they'll say, well, she said this earlier, she's saying this now. Now let's match the two. They are not symmetrical. Absolutely. So you know what? Has she changed her view? That's not the event. The event is these politicians and this Athletics Federation is trying to put pressure on her. That's the real story.
You try and put Jaisha through a test is Because they want to incredible. hide. Somdev, you tell the viewers want to today. hide. You tell him today why are we concerned. You tell us, Somdev. You are a champion tennis player. You have nothing to personally gain from this. Neither does Aparna Popat, right? Why are you concerned, Somdev? You've come through the odds to reach where you are as a tennis player as well. You tell us today. It'll be far more authentic than my saying it. I'm not a sportsman. You tell him why where we are concerned. The biggest reason for concern right now is that the best people who should be running sport in our country are not running sport. Oh, absolutely. Mr. Rao, can you tell me honestly, are the best people in athletics running athletics right now? If they were the best people running athletics right now, would this have happened? Would they have overlooked the fact that a marathon runner has declined? Or they say that a marathon runner has declined? Water. Water. Ashutosh Sharma, water. Pani. No, kindly listen to me. The only thing. So first of all, Ashutosh Sharma, will you quit? Ashutosh Sharma, will you quit in shape? Listen to you for what? No, I am just telling you that whatever has been happened, whatever has been narrated by the athlete, if it is true, the persons who are responsible, they should be taken. No, Athletics Federation of India is calling her. No, Athletics Federation of India is saying she's fabricated statements. They put the blame on her. Sir, I am a sportsman and I am associated with sports for the last 65 years. So then quit from Athletics Federation. Only one thing, that during the run, marathon run, everything is provided by the host. What are you saying? Aparna, I think you need to come into this. What are you saying is the responsibility of every country can provide water every 2.5 kilometers. India can't. Why can't we? We have less money, less officials. I'm sorry. How many officials were traveling, walking around with netas in Rio? I think Aparna, you can come in on that point. You know, you're trying to blame. Aparna, go ahead. Aparna, please. I'm closing in 2 minutes. I'm sorry. Aparna. No, you can't. Aparna. So, I mean, water is provided by the organizers and there's no doubt about that. But she is competing for India. She needs her own refueling formula. She doesn't have to rely. She's competing at the highest level here. Nobody denies anything. No, you deny. All facilities are provided during the You deny. Mahesh is calling it to Why would other champion athletes from other countries have it? No. Indian officials have to know what her requirements are. No, and it is. It's not the first marathon. She's the national record holder for marathon. I'm sorry. We have a couple of callers here. Mahesh from Coimbatore. Mahesh. Hi, Mahesh. Mahesh, please reduce the volume of your TV set, please. Reduce the volume of your TV set. Otherwise, we'll get an echo. Yeah, reduce the volume of your TV set. Just put on mute. Good evening. Go ahead. Yeah, first of all, hats off to OP Jaisha for completing this track. Yeah. And with the jokers like Rao, you should be happy that OP Jaisha has come back alive from Rio de Janeiro. Well said. You should not ask to resign Ranga Rao. Let this month 31st, when he comes to collect his salary, let him run 42 kilometers without drinking a drop of water and get his salary. Then he will understand what is marathon and why water is needed. Sitting in an AC room and talking something nonsense is absolutely ridiculous. Let this joker run 42 kilometers. No personal insults. Mahesh, no personal insults, please. No personal. Let's remain on the... No, Mahesh, I take your point. You made your point. Now I'm going to Yog Mishra from Kolkata. No personal insults, please. Yeah, Yog Mishra. Good evening. Good evening. Arnabji. Yeah, good evening. First of all, I want to ask the Athletic Federation guys who are generally politicians that we dream of becoming a superpower in a decade or couple, but if we can't provide water to our athletes after every 2.5 or 5 kilometers, then how can we dream of becoming a superpower? Yeah, I know. Incredible. They should be shame of themselves. Mr. Rao, I'm closing with just one thing. Mr. Rao, I'm just going to say one thing. Two options you have. I'm telling you clearly, Mr. Rao, on behalf of all the viewers of the Newshour tonight, one, entire top brass of Athletics Federation of India apologizes to OP Jaisha. Should resign. Apologizes to OP Jaisha. No, first option is all of you apologize, Mr. Ranga Rao. Collectively issue a press release saying we tried to put the blame on her. We should have had the sense to know that we also have some responsibility. Correct. Second option, if you are going to be stubborn about it, is that you all quit. Now, you don't quit, you don't apologize. Remember, people of India are watching.
People of India are watching. You won't have the moral authority to stay on. We won't let it go. We'll take it to This is to be followed up. I thank you all. Let's see what the AFI does. I thank you all for joining me on debate number 2 on the Newshour tonight. Thank you.